All right, assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing well. So in this session, we are going to quickly go over all the transformations concepts that you need to know about in O-level maths. So let's begin. First of all, we need to know that there are four transformations that are there in the syllabus: translation, reflection, rotation, and enlargement. So let's begin with translation first. So translation क्या होती है? It's basically a shift of an object to another place. वो object आपका उठा के कहीं और रख दिया. How is it described? It's described by a column vector like this: x and y. X here represents the horizontal component and y represents the vertical component. Horizontal component होता है उसमें अगर plus आ रहा हो, so that means you're moving towards the right. अगर minus आ रहा हो, you're moving towards the left. If you have plus in the vertical component, that means you're moving up. If you have minus in the vertical component, that means you're moving down. Okay, so this is how a translation is represented using a column vector. Now, what is a translation? आपका shift हो रहा है to another position. आपकी size same रहता है, shape same रहती है, orientation, direction of the object that remains the same as well. This is the simplest of all the four transformations basically. Let's do an example. So we have this triangle here, that's triangle A. We have to translate it by this vector, -3 and 5. Now, what is -3? -3 is the horizontal component, or you can say the x component. 5 is the y component. Okay, so आप कोई भी एक point लोगे अपने triangle के ऊपर. Let's say you take x here. X को आप move कर दोगे 3 units to the left, right? So this means 3 units to the left. And vertical component means 5 units up here because that's positive. So x को आपने लिया, 3 units left move किया, 1 2 3 you get here, and then 5 units up, so 1 2 3 4 5, and x is going to be right here. X bar आपका यहाँ पे आ जाएगा. You can do the same for the other points one by one as well, or you can just draw the rest of the figure here like that. You know कि x से ऊपर 2 units और ऊपर जाके z आ जाएगा आपका, so that's your z dash, and x के right side पे साथ वाले box के अंदर you've got y. So that's y dash, and then you just join those points, and that will be your final result there. So it's going to look something like this. Yeah, आपकी आगे translated figure. Okay. So this is what your translated figure looks like. Okay. Now, what if you had to go the other way around? If you were given that there's a triangle here, that's triangle A, up और ये transform होके C पे चले गई. Okay, the C triangle here is right at the bottom here. C पे आ गई. Okay, how do you describe this transformation? अब देखिए, आपको नजर आ रहा है कि साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं हुई है. वही फिगर आपको लग रहा है उसको उठा के बस यहाँ पे नीचे रख दिए, एक उठा के यहाँ पे नीचे प्लेस कर दिए. So it's a translation because of that reason. How do you describe a translation? You will say this is a translation. And then you'll just write the column vector that represents that translation. Column vector के साथ लिखेंगे corresponding points देख लें. So for example, original figure के अंदर x के ऊपर 90 बन रहा है, तो आपके पास result है उसके अंदर 90 का बन रहा है ये. That's going to be your x bar. That's the corresponding point. आप देख लें x move होके x bar पे कैसे आ सकता है. So how many units are we moving horizontally? X को हम 1 2 3 units right आ रहा है. So it's going to be 3 here, the horizontal component, and then you're going 1 2 3 4 5 6 units down. So down ja rahe hain, so that's going to be -6. So this is the column vector that represents this translation. Okay, all right. So that was fairly straightforward. Now the next is reflection. Now, how is a reflection defined? Reflection is defined by a line of reflection. ठीक है, एक line of reflection आप बता दो, that fully describes a reflection. अब इसमें होता क्या है? आपकी जो भी line of reflection है, your object and the image, they are symmetrical about that line of reflection, right? जो left जो उसके एक side पे आपकी figure आ रही होती है, exactly वही figure दूसरी side पे होती है, बस वो flip हो जाती है. So in this case as well, the size remains the same, the shape remains the same. However, the orientation is different. The direction of the image that can change. And you can also remember it this way that so when you're doing reflection, आप उसमें क्या करोगे? जो corresponding points होंगे आपके object के और image के, उनका जो distance होगा from the line of reflection, that is going to be equal. Let's try to understand it using some examples. So let's start with this. Horizontal lines के अंदर reflection कैसे करते हैं? So for instance, you have the most common one, that's one of the most common ones, that's reflection in x-axis. आपके पास ये figure है, that's the object A, इसको आपने reflect करना है x-axis के अंदर. All right, how do you do this? आप individually एक point को देखोगे. So remember, whenever you do transformations,
you look at one point at a time, and that helps you think about it better. So for instance, let's think about this point P here. Line of reflection क्या है? X-axis. This is the line of reflection. अब line of reflection horizontal है, तो perpendicular distance देखना है आपने. तो P का perpendicular distance किस तरह आएगा? आप देखिए vertical line इस तरह से बनेगी. आप बस vertical boxes count कर लें. एक box ऊपर है. आपके line of reflection से P is just one box up like this. So you go just one box down here. On the other side of the line of reflection, that's going to be your P dash. Similarly for Q, it's one box up. You go one box down there. That's going to be your Q dash. For R, it's three boxes up. Up three boxes नीचे चले जाओ. Your R dash is going to be right here. So your reflected figure looks something like this. That's your reflected figure. Now you can do this in any horizontal line. कोई भी horizontal line होगी, आपने क्या करना है? Vertically boxes count कर लेना है. So R को देख लें. अब y equals 4 के अंदर आपने reflect करना है. What happens? You look at this distance here. R is 1 unit down, so it's going to be 1 unit up there. After reflection, R comes here. Then P is 3 units down from that line of reflection, right? 3 units down. अब 3 units ऊपर ले जाओगे उसको, and that's going to be right here. Q is again 3 units down, but at this point here, आप उसी तरह 3 points उसको 3 units उसको ऊपर ले जाओगे, 3 boxes ऊपर ले जाओगे. That's going to be a Q dash, and that's your final result. That's your reflected figure. Okay. अच्छा, what happens when you have to reflect in the y-axis or any vertical line? अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी line of reflection vertical है, तो आप जो boxes count कर रहे होगे, आप horizontal boxes count कर रहे होगे इस तरह से. तो R का distance देखिए यहाँ से कितना है? It's one box like this. So one box on the other side, that's going to be your R dash. Okay. Similarly for P is also one box on the right. So you go one box on the left side. On the other side of the line of reflection, that's going to be your P dash. And then Q is 2 units on the right. So you go 2 units left, and that's your point Q here. And your triangle looks something like this. Okay. Now this applies for any vertical line of reflection. आपने क्या करना है? Horizontally boxes count कर लेना है, because horizontally उसके perpendicular होगा उस line of reflection के. Q का distance इस line of reflection से क्या है? So this is the line x equals 4. Let's look at the distance of Q. Q is 2 units on the left. आप 2 units right पे चले जाओ. That's going to be a Q dash. Similarly P is 3 units to the left. आप 3 units right पे चले जाओ. That's your P dash. For R is 3 units left पे. उसको 3 units right पे ले आओ. That's going to be your R dash like this. Okay. And then you just join these points, and that's your final result. This is the reflected figure. Okay. So that's what happens when you have horizontal or vertical lines. Now, what if you have lines that are not horizontal or vertical? So most common amongst them are the lines that have a gradient of 1 or -1. So one gradient आपका, for example, इस line का होता है. That's a very common line. Y equals x. इसके अंदर आप किस तरह से reflect करते हो? अब देखें, जो भी आपको इस तरह की लाइन होगी ना gradient 1 की, y equals x or any other line with gradient 1, ये हमेशा इस तरह से पास कर रही होती है. If you look at the smallest box here on this grid, so आप ये box देखें, ये इसका diagonal बन रहा है, right? ये देखें, इस box का square का diagonal बन रहा है. तो इसका perpendicular क्या होएगा? इसका perpendicular distance आप calculate कर रहे होगे, you will be looking at this diagonal here. दूसरे diagonal के ऊपर ये आपका perpendicular बन रहा होएगा. So whenever you have to reflect in lines like these, y equals x line हो या कोई भी और line से gradient 1 आ रहा हो, यानी कि वो इस छोटे square के corner से pass कर रही हो, आपने simply क्या करना है? Figure पे इस direction के अंदर दूसरे diagonal के ऊपर boxes count कर लेना है. इस direction के अंदर boxes count कर लेना है. So let's do that here. What do we have? We have these points P, Q and R. अभी देखें यहाँ पे ये भी है कि line of reflection जो है figure के अंदर से pass कर रही है. Now, if you're looking at one point at a time, this will not confuse you because आपने सिर्फ एक point करके reflect करना है. तो P तो है वो line of reflection के ऊपर ही आ रहा है. Remember, जो भी चीज line of reflection के ऊपर आती है, that does not change. So P stays here. So this is your P dash. P does not change. Q देखें, line of चलो पहले R देख लेते हैं. R line of reflection से कितना दूर है diagonally? So remember, हमने इस तरह से देखना है ये diagonal. This is one box diagonally like this. अब उसी तरह से one box diagonally नीचे आ जाओगे. That's going to be your R dash. Similarly, Q देखें कितना है diagonally? Q is half a box diagonally. तो आप half a box दूसरी side पे चले जाएं. That's going to be your Q dash. So this is what your figure looks like now. It's going to be something like this.
Okay, P dash Q dash and R dash. This is your final result. This is the reflected figure. If you look at one point at a time, this will not confuse you. Similarly here, if you have any other line that has gradient 1 as well, आपने उसी तरह देखना है इसको diagonally boxes count कर लेना. Okay, so let's do that here. P को देखें, it's 1 box here and then 1.5 box. So you just go 1.5 box on the other side, so half and then 1. That's your point P dash. Achha, let's do R. R is half box downwards, half box अब ऊपर चले जाए diagonally. That's your R dash. Similarly for Q, you go diagonally like this, 1 box and 2 boxes. So 2 boxes on the other side, 1 and 2. That's going to be your Q dash. So your final result here after this reflection looks like this. So that's how you reflect in lines that have gradient 1 that includes the line y equals x. What if it's the other way around? Gradient here that is -1. So for example, the most common line there is y equals -x. It looks like this. How do you reflect in this? अब यहाँ पे देखें ये वाला diagonal है, sorry, ये वाला diagonal है छोटे वाले box का in this direction, right? तो इसमें जब आप कर रहे होगे, इसमें जब आप distance measure कर रहे होगे, perpendicular distance आप कौन सा देखोगे? दूसरे diagonal के ऊपर, because this makes it perpendicular here. आपने क्या करना है? इस diagonal के ऊपर boxes count कर लेने हैं. So let's do that here. For P, this is 1 box diagonally. So you go 1 box on the other side diagonally. That's your point P dash. Okay, Q, it's 1 and 1.5. So you go half and 1 more. That's going to be your Q dash. And then finally, you've got R there. That's 1 box and then 2 boxes. So 2 boxes on the other side, 1 and 2. That is your R dash. Okay, now you just join those points and that is your final result. So this is what your figure looks like now. This is the reflected figure. All right, so you can just mark that point P above there. So P was right there. This is your P dash, Q dash and R dash. ठीक है, अब इसी तरह कोई भी और line हो जिसका gradient -1 आ रहा हो, you'll use exactly the same thing here. मतलब इस तरह से boxes में इस तरह diagonally जा रही हो, उसका जो 90 degrees होएगा वो इस डायरेक्शन के अंदर डायगोनल होएगा. आपने इस तरह से बॉक्सेस काउंट कर लेने हैं. सो R का देख लें. R is 1 box here diagonally, perpendicularly, 1 box on the other side. That's going to be your R dash. ठीक है, जितना एक साइड पे होगा उतना डिस्टेंस दूसरी साइड के ऊपर. Q is 1 box and then 1.5 box. So half box here and another box here. That is your point Q dash. For P, that's 1 and 2 boxes. So you go 1 box and 2 box here. That's your point P dash. So the transformed figure looks something like this. That is your final result here. Okay, P dash, Q dash and R dash, that is the reflected figure. So this is how you can do it for these common lines. कभी-कभी ऐसा हो जाता है rarely कि वो slanted हो और उसका gradient 1 और -1 के अलावा कुछ और हो. उसमें फिर आपको रूलर से ही करना पड़ेगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रोटेक्टर के साथ आप देख सकते हैं उसको 90 डिग्रीज रख के कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप दोनों साइड्स पे जो है वो कर लो और इक्वल डिस्टेंस रख लो परपेंडिकुलर बोथ साइड्स ऑन बोथ साइड्स. उसमें यहाँ पे इस तरह के कोई मेथड नहीं चलेगा. वहां पे आपको खुद से जो है वो प्रोटेक्टर यूज करके रूलर यूज करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड्स पे इक्वल रख के करना होगा. Now for some common reflections, some of you might have learned it like this as well. So if you have done it like this, just quickly go through this. Although I personally find it harder to remember, but if you are used to doing this, that's also fine. So यहाँ पे अगर आप x-axis पर reflect करो, remember it only works for these lines on the left side. Y equals -x, y equals x, y-axis and x-axis. को अगर आप generalize कर लें, horizontal line कोई भी हो जाए, vertical line कोई भी हो जाए, लाइन विद ग्रेडियंट 1 हो जाए, लाइन विद ग्रेडियंट -1 हो जाए, तो उसमें फिर ये वाला मेथड नहीं चलेगा. इसमें आप कुछ और जो है वो चेंजेस करनी पड़ेंगी, एडिशंस करनी पड़ेंगी बिफोर दिस वर्क्स. सो आई वुड रिकमेंड दैट यू लर्न दिस लॉजिक दैट वी डिस्कस्ड हियर. बट इन एनी केस दिस इज व्हाट हैपेंस फॉर दीज कॉमन लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन. एक्स एक्सिस में आप रिफ्लेक्ट करते हो तो क्या होता है, योर वाई कोऑर्डिनेट जस्ट चेंजेस साइन. जब आप वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसका साइन चेंज हो जाता है. जब आप वाई और
y equals x में रिफ्लेक्ट करते हो, आपके ये कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाते हैं. जब आप y equals minus x में रिफ्लेक्ट करते हो, so your coordinates swap and your sign also change. दोनों चीजें एक साथ होती हैं, right? So if you remember it this way, this is what you do in that case. Okay. Now, how do you identify reflection? आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, आपको कैसे पता कि वो रिफ्लेक्शन है? एक तो आपने देखना है कि साइज और शेप सेम होगी, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, जो होगी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगी. अब यहाँ पे मसला आता है डिफरेंशिएट करने का रोटेशन और रिफ्लेक्शन में मोस्टली. वो आप कैसे करोगे? आप कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर और अपने इमेज के ऊपर. अगर वो पैरेलल लाइंस आ जाती हैं, देन दैट्स अ रिफ्लेक्शन. अगर वो पैरेलल लाइंस नहीं आती तो वो रोटेशन होता है. ठीक है, लेट्स डू एन एग्जांपल आफ्टर दिस. बट इसी तरह से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? You basically just find the midpoints of the corresponding points और उनको ज्वाइन कर देते हैं. That is your line of reflection. Let's do that here. So सबसे पहले आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है. You have this transformation that maps A onto B. Okay, A जो है वो B पे मैप हो रहा है. You have to describe this transformation. आपको लग रहा हो शायद ये रोटेशन है और शायद रिफ्लेक्शन भी हो सकता है. We are confused about that. How do you figure out which one of the two it is? You just join the corresponding points. अच्छा, corresponding points आपने कैसे मार्क करने हैं? आपने एंगल्स देख लेने हैं. For example, ओरिजिनल फिगर के अंदर 90 डिग्रीज को अगर आपने x कह लिया, तो ट्रांसफॉर्म फिगर के अंदर भी 90 डिग्रीज वाले पॉइंट को आपने x कह दिया. So that's x bar. Okay. इस तरह ओरिजिनल फिगर में 90 डिग्रीज के साथ जो छोटी वाली साइड है, उसके एंड पे हमारे पास y है. तो आपके पास जो ट्रांसफॉर्म फिगर है 90 डिग्रीज के साथ जो छोटी वाली साइड है, वहां पे आप y लगा दोगे. एंड देन द थर्ड वन, लॉन्गर साइड है, 90 डिग्रीज के साथ वहां पे z आ रहा है, इसी तरह आप उसको z मार्क कर दोगे. So once you have marked these corresponding points, what do? You just join them with straight lines. ठीक है, अब इनको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करके चेक कर लें एक दफा कि आपके पास पैरेलल लाइंस आती हैं कि नहीं आती. x बार को ज्वाइन कर दिया, z बार को ज्वाइन कर दिया. Similarly, you join y and y bar. Now you see these are parallel lines. If these turn out to be parallel lines, that means it's a reflection. ठीक है, so parallel lines आ रही हैं, that means it is a reflection. जब आपको पता चल गया रिफ्लेक्शन है, अब यहाँ लिख दोगे it's a reflection. अब रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के लिए you have to write the line of reflection. So what is the line of reflection here? That's what you have to figure out. Line of reflection कैसे find करते हैं? We basically find the midpoints of corresponding points और उनको join कर देते हैं. So midpoint find करते हैं, z bar का midpoint. आप उसको ruler से भी find कर सकते हो. Just place a ruler that joins z and z bar. उसके middle में देख लो क्या आता है. या आप coordinate से करना चाहते हैं, although that's going to be quite longer. But I would suggest I would suggest basically कि आप ruler use कर लें. लेकिन अगर आप उससे comfortable है ज़्यादा coordinate से, that's also fine. Ruler आप यहाँ पे रखोगे, इसका midpoint z bar का is going to be right here. This is the midpoint of z and z bar. इस तरह y और y bar का midpoint find करोगे, that is going to be somewhere around here. And then you find the midpoint of x and x bar using a ruler. x bar को join करते हुए ruler रखोगे, उसका midpoint देख लोगे क्या आता है. So that's your midpoint for x bar. You have 3 midpoints. You just join them, and that will be your line of reflection. Because आपने midpoints को join कर दिया, so that will be your line of reflection. That looks something like this. I'm going to draw that here. Line of reflection. That basically looks like this. Okay. So this is your line of reflection. Join कर दिया. ये आपके पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा. उसमें आपने इक्वेशन लिखनी हो, आपको पता है ग्रेडियंट इसका 1 है, राइट, बिकॉज़ इट इज पासिंग थ्रू दीस कॉर्नर्स ऑफ द बॉक्स. ग्रेडियंट आपको 1 है. अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आप उसको कोई भी पॉइंट्स लेके आप उनको फिगर आउट कर लें. ग्रेडियंट 1 है, y इंटरसेप्ट इज 6, so this line is basically going to be y equals x plus 6, right? y equals mx plus c use करके gradient 1 है, y intercept 6 है, so you get y equals x plus 6 here. That is the line of reflection. That's how I describe this. Okay, so that's all about reflection. किस तरह से आप line of reflection find करते हैं, किस तरह से identify करते हैं कि वो reflection है. Let's move on to rotation. Now rotation is defined by an angle, और इसके साथ आपको बताना होता है whether that's clockwise or anti-clockwise, except 180 degrees, because उसमें फर्क नहीं पड़ता. So angle clockwise or anti-clockwise, and at the same time you also tell what is the center of rotation. ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है, रोटेशन में एक सेंटर ऑफ रोटेशन, एक पॉइंट होता है. सो दिस इज अ सिंगल पॉइंट, राइट? इट्स नॉट अ लाइन, इट्स अ सिंगल पॉइंट. ओके, अब रोटेशन में भी क्या होता है, साइज और शेप सेम रहते हैं.
आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब आपने डिफरेंशिएट करना हो बिटवीन a reflection and a rotation. What do you do for that? You join the corresponding points of the object and the image. अगर वो parallel lines नहीं आती, that means it's a center of rotation. Okay. अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो जो corresponding points, जो distances होते हैं center of rotation से, वो भी equal होते हैं. So that's also something that you should keep in mind. Let's do some common rotations. So let's say you have 90 degrees clockwise rotation about the origin. Origin के about आपने 90 degrees clockwise rotate करना. Okay. Origin is the center of rotation. So origin is the center of rotation. Now it helps to think of it like this कि आप इस तरह से एक plus sign बना लें. Center में आपके center है, center of rotation, middle में, right? ये R आपके पास right पे है. Then you have down, left and up. 90 degrees clockwise rotation करते हैं तो क्या होता है, जो up होगा अगर आप उसको 90 degrees rotate करोगे ये right बन जाएगा, right? तो up goes to right when you do 90 degrees clockwise rotation. इसी तरह से right goes to down, right? Down goes to left and left goes to up. Okay. Now this basically helps us think here how we have the center of rotation. This is the center of rotation. Center of rotation से आप x पे कैसे पहुंच सकते हो? You have to go 1 unit right and then you have to go 1 unit up. Okay. जब इसको आप rotate करोगे 90 degrees clockwise, what happens? Right goes to down. So अगर आप यहाँ पे लिख लें, x पे आप कैसे पहुंचे थे center of rotation से? 1 right and 1 up. तो x bar पे कैसे पहुंचोगे? Right कहाँ चला जाएगा? Right will go to down. That's 1 down. And down will go to up will go to right. Up right पे आ जाएगा. So you say this is 1 right. अब center से क्या करोगे? You go 1 down, you go 1 down, and then you go 1 right. That is your point. That is x bar. X जो है वो rotate होके यहाँ पर आ जाएगा. Does that make sense? तो आप इस तरह भी सोच सकते हो. पहले आपके पास ये फिगर बन रही थी x तक पहुंचने के लिए. This was the center. This was x. इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर दो इस फिगर को, तो क्या बन जाएगी? 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद ये बन जाएगी. तो सेंटर से यहाँ पे आपके पास x बार आएगा. ओके. अच्छा, लेट्स do it for y as well. What happens for y? y तक आप कैसे पहुंच सकते हो? From the origin, from the center of rotation. Remember, यहाँ पे center of rotation is important. Center of rotation से आप y पे कैसे पहुंच सकते हो? You go 2 units right. Okay, so you go 2 right and then you go 1 up. You go 1 up after that. Okay, so 2 right and 1 up. So it's a figure like this. इसको आप rotate कर दें 90 degrees clockwise. What is that going to look like? इस तरह बन जाएगी. But let's confirm this as well. आपको पता है right जो है वो कहाँ जाएगा? Right down पे चला जाएगा. ठीक है? So y bar is going to be 2 down. Right down पे चला गया. अब कहाँ जाएगा? अब right पे चला जाएगा. So it's going to be 1 right. So from the center of rotation, जो भी आपका center है, you go 2 units down and then 1 right, and that's your y bar. ये आपका y bar आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है? I hope that makes sense. Similarly, do this for z. Z तक कैसे पहुंच सकते हैं आप? Z तक पहुंचने के लिए you have to go 1 unit right and then 3 units up. 1 right and 3 up. So let's do it for z. 1 right and 3 up. So z is 1 right and 3 up. So z bar क्या हो जाएगा? That will be right goes down, so 1 down, and up goes right, so that's 3 right. So आप यहाँ से start करके 1 down and 3 right, z is going to be right here. So center से start करके आपके पास ये x bar, y bar, z bar आ गया. That's your rotated figure. Okay. Now, similarly, you could do it for any center of rotation. It's not necessarily for the origin. कोई भी center of rotation हो, आपने बस क्या करना है? Center से देख लेना है कहाँ पे किस तरह पहुंच सकते हैं उस point पे. Let's do 90 degrees anti-clockwise rotation. Okay. What happens in this case? आपका center क्या है? Center is 2, 5 here. 2, 5, that is the center of rotation in this case. Okay. Now, how do you reach x from the center of rotation? X पे कैसे पहुंच सकते हैं center rotation से? You go 1 left. Okay. 1 left, and then we go 4 units down. 1 left and then 4 down. That's how we reach this point x. Okay.
1 left and 4 down. अब देखिए 90 degrees एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होएगा, लेफ्ट कहाँ जाएगा, लेफ्ट विल गो टू डाउन, ओके, x bar is going to be 1 down. डाउन कहाँ चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज के अंदर, डाउन विल गो टू राइट, सो दैट्स 4 राइट. सो अब सेंटर से स्टार्ट करके आपने क्या करना है, यू गो 1 डाउन and 4 right. So that's your point x bar. X bar rotate होके यहाँ पर आ जाएगा. Similarly, let's do it for the others. Y क्या था? Y was from the center. Horizontally कोई movement नहीं है. So 0, left, right. But it's just 1, 2, 3, 4 down. 4 down है sir. So Y bar क्या हो जाएगा? Down कहाँ चला जाता है? Down goes to right when you do anti-clockwise rotation. ठीक है? Down right में चला गया. That's going to be 4 right. So center से आप क्या करो, 4 right देख लो, 1, 2, 3, 4. That's going to be your Y bar. Then you finally do Z. Z from the center of rotation, that is 1 left and 2 down. So that's 1 left and 2 down. Z bar कहाँ चला जाएगा? Left कहाँ चला जाता है anti-clockwise rotation में? Down पे. So that's 1 down. और down कहाँ चला जाता है? Right पे. So that's 2 right. So center से you go 1 down and 2 right. Is center se, and you get this point here, that is your Z bar. That is going to be a rotated figure when you join these points, X bar, Y bar, and Z bar. So that is the rotated figure about this center of rotation. Okay, so that's how you can think about this, and you can do this for any center of rotation. Center से आपने देखना है आप किस तरह से उन पॉइंट से पहुंच सकते हो और वो कैसे चेंज हो जाएंगे after that rotation. All right, I hope that makes sense. Let's move on to 180 degrees rotation. What happens in that case? इसमें भी आप उसी तरह यूज कर सकते हो. ये राइट साइड वाला जो प्लस साइन है, देखिए अप डाउन चला जाएगा, राइट लेफ्ट चला जाएगा, डाउन लेफ्ट डाउन अप चला जाएगा और लेफ्ट राइट चला जाएगा, राइट. So if this was the center now, 2, 4, you can either use that grid. 180 degrees rotation के अंदर वैसे बहुत आसान होता है. आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप अपना रूलर रखोगे, रूलर से एक साइड पे जितना डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है उतना ही डिस्टेंस आप देख लो दूसरी साइड के ऊपर, उतनी लाइन एक्सटेंड कर दो दूसरी साइड के ऊपर, तो Z जितना नीचे था उतना ऊपर चला जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी योर Z bar. उस सेंटर से जितना डिस्टेंस नीचे आ रहा था उतना ही ऊपर चला गया ऑपोजिट साइड पे. इस तरह Y देखें, Y is 3 units here, तो 180 degrees rotation के बाद कहाँ चला जाएगा, 3 units up, that's going to be your Y bar. इस तरह X का आप देख लें किस तरह आ रही है, रूलर के ऊपर आप रखेंगे, it's like this. इसी लाइन को आप एक्सटेंड कर दो उतना ही डिस्टेंस ऊपर वाली साइड पे, that's going to be your point X bar, and that's your 180 degrees rotation. आपने बस रूलर रखना है, सेंटर से एक साइड पे उस पॉइंट का जितना डिस्टेंस आ रहा है उतना ही डिस्टेंस आपने एक्सटेंड कर देना है दूसरी साइड के ऊपर, and that will be your rotated figure by 180 degrees. Okay, so that is the final result that you get from there. X bar, Y bar, and Z bar like this. That's 180 degrees rotation about this center of rotation. That was 2 and 4. Okay. Now what happens if the angle of rotation was not something common? Let's say 45 degrees angle के ऊपर rotate करना कहते हैं आपको, ठीक है? इसमें आप इसे थोड़ा सा ट्रिकी है. इसमें आपने क्या करना है? आपने join करना है center of rotation को या पर center of rotation. And remember हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था center of rotation का distance ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के पॉइंट से और इमेज के पॉइंट से इक्वल होता है. अगर हमने 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है इसको, व्हाट विल डू इज यू विल जस्ट जॉइन दीस पॉइंट्स. आप ये C और Z को, फॉर एग्जांपल आप Z को रोटेट करते हो पहले, लेट्स डू वन पॉइंट एट अ टाइम. तो C और Z को ज्वाइन करेंगे, ठीक है. आपने क्या करना है, इतनी कंपास खोल के यू विल मेक एन आर्क हियर. इतनी कंपास खोल के यू विल बेसिकली मेक एन आर्क हियर दैट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. तो आपने इतनी कंपास खोल के आप एक आर्क बना देनी है, ठीक है, which will look something like this. ये आपने एक आर्क बना दी. क्यों आर्क बनाई? क्योंकि C का डिस्टेंस Z के साथ चेंज नहीं हो सकता. रोटेट होने के बाद वो इसी आर्क के ऊपर कहीं पे होना चाहिए, है ना. इसी आर्क के ऊपर कहीं हो सकता है, इससे बाहर कहीं और नहीं जा सकता, क्योंकि उसका डिस्टेंस Z से सेम रहना चाहिए. तो आपने देखना है कि 45 डिग्रीज एंगल किधर बन रहा है. 45 डिग्रीज एंगल आपको कहाँ पे बन रहा है. So how do you measure that angle? You basically use a protector. आप एक प्रोटेक्टर यूज करोगे, आप अपने प्रोटेक्टर को यहां पे रखोगे C के ऊपर लाइक दिस, ठीक है. 0 यहां से स्टार्ट होएगा, यू विल मेजर 45 डिग्रीज, दिस इज 45 डिग्रीज,
ठीक है 45 डिग्रीज आपने देखा यहाँ से लाइन एक्सटेंड की wherever they intersect, let's say they intersect here, that's going to be a point z dash. That's a z dash. ये आपने rotate कर दिया इसको 45 degrees because this angle here is 45 degrees from there and it's anti-clockwise rotation. आपने एक arc बनाई z पे like this, तो उसका distance same रहे c के साथ और फिर आपने angle measure कर लिया, आपने देखा 45 degrees कहाँ पे आता है, जहाँ पे intersect करते हैं, that's a z bar. You repeat the same process for x bar and y bar और उन points को आप join कर दोगे. ठीक है, यही चीज आप x पे करो, x पे एक आर्क बनाओ, 45 डिग्रीज एंगल मेजर करो, c x को ज्वाइन करके, वही आप y पे करो, जो आपके पास c डैश, जो आपके पास x y y डैश z डैश पॉइंट्स आए, उनको ज्वाइन कर दें, that will be your final figure. So that's how you rotate if the angle is something other than those common angles 90 or 180. All right. अच्छा, अब जो common rotations हैं, उन पे आप again, if you do it like this, you can just remember it this way. So जो common rotations है वो हो सकती हैं इससे, or center origin होना चाहिए. For example, 90 degrees clockwise rotation or 270 degrees anti-clockwise, it's the same thing. 90 degrees clockwise करें, 270 degrees anti-clockwise करें, they're the same thing. What happens in this case? You swap these coordinates. इनको आपने interchange कर दिया. ठीक है, ये आपने interchange कर दिया, and then you also change the sign of y. ये आपने sign भी change कर दिया y का. Similarly for 90 degrees clockwise rotation, 90 degrees clockwise rotation में क्या आएगा? Again, you change coordinates, you switch coordinates here as well. And then you change the sign of the x coordinate. ठीक है? 180 degrees वाले के अंदर, it's the simplest, you just change the signs of the both coordinates. आपने दोनों के बस sign change करने हैं. And that's your 180 degrees rotation. ठीक है? So that's, if you remember it this way, you can do it. 180 degrees का तो आप याद रख सकते हो. बाकी थोड़ा सा कभी chance होता है that you mix the things up. So you have to know the logic or this process of doing this graphically so that you do not do any mistake there. All right. How do you identify rotation now? Remember, इसके अंदर भी आपके size और shape same रहते हैं, they do not change. However, the direction is different. So how do you differentiate between a rotation and a reflection? आप corresponding points को join करते हो, जो result आना चाहिए वो non-parallel lines होनी चाहिए, वो parallel नहीं होनी चाहिए. ठीक है? Then if they are not parallel, that means it's a rotation. So for instance, let's say you have this figure here. Okay, so you have to describe this transformation that maps A to B. How do you figure this out? Now, it could be a reflection, it could be a rotation, although it does look like a rotation, to be honest, but let's just verify. How do you verify that? You join corresponding points. तो corresponding points को उसी तरह आपने mark करना है जो मैंने पहले बताया, angles देख लें और longest side, shortest side देख लें. Let's join P and P dash. P और P dash को join किया. It looked like this. Join R and R dash, that looks like this, and it's already clear that these are not parallel lines. They're not parallel lines, that means it's a rotation. So that's what you have figured out already. It's not a reflection, it is a rotation. Okay, so it's a rotation. अच्छा, rotation तो पता चल गया हमें. अब rotation के अंदर आपको क्या बताना होता है? Angle, direction and the center. तो angle क्या है और center क्या है? ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है और आपने एंगल बताना है whether that's clockwise or anti-clockwise. Okay. Now, how do you figure those things out? अच्छा, इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है. ठीक है, सेंटर रोटेशन फाइंड करने के एक तो तरीका है, फॉर्मल तरीका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप ड्रॉ करेंगे. सो यू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द इमेज. सो फॉर इंस्टेंस, P और P डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे आप सबसे पहले. Right, so P or P dash perpendicular bisector, that's going to look something like this. This is the perpendicular bisector of P dash. Then you can also draw another perpendicular bisector. Let's say the perpendicular bisector of R and R dash. What is that going to look like? That will be something like this. ये आपने R dash का perpendicular bisector बना लिया. ठीक है, you know how to draw perpendicular bisectors using a compass. जहां पे intersect कर रहे होंगे, that is your center of rotation. Okay, so this here is your center of rotation. आप verify कर सकते हो. R तीसरा perpendicular bisector बना के भी R और R dash का वो तो हमने बना लिया. Q dash का perpendicular bisector बना के आप इसको verify भी कर सकते हो. So Q dash का perpendicular bisector is going to look something like this. It could be like this. Exactly, yeah, something like this. And that's the perpendicular bisector of Q dash.
तो वो भी इसी से पास करेगा। आप तीनों ड्रॉ कर ले बेशक, दैट यू कंफर्म वो तीनों एक ही पॉइंट से पास कर होंगे, दैट विल बी योर सेंटर ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे आप देख लें सेंटर क्या बन रहा है, दिस इज 4 and 4, ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन आपका 4 4 आ रहा है। अब इसको चेक करने का एक और तरीका भी होता है। एक तो तरीका है, ठीक है, ये आप perpendicular bisectors, this works in every single case, but sometimes to make this process a bit quicker, remember center of rotation का distance आपके corresponding point से equal होता है, so you can just do it mentally sometimes as well, कि आप क्या करें, you take a few possible points और उनके डिस्टेंसेस चेक कर ले कि अच्छा उनके डिस्टेंसेस क्या इक्वल आ रहे हैं, अगर इक्वल आते हैं तीनों पॉइंट्स से, then that is the center of rotation. So for instance, let's try this. हम यहाँ पे कोई पॉइंट अज्यूम करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा let's try r and r dash first, और let's say p and p dash. p और p dash डिस्टेंस हमारा ये मिड पॉइंट बन रहा है उसका, ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट बन रहा है p और p dash का, ये इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस p और p dash से इक्वल है. Let's see if this is the center of rotation. Let's check this out. हम कुछ पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका डिस्टेंस p और p डैश से तो इक्वल है, व्हाट अबाउट q and q डैश? वेल q डैश से ज्यादा करीब है, q से कम करीब है, सो वी हैव टू गो अ बिट क्लोजर टू q डैश, क्लोजर टू q नाउ, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि p और p डैश का डिस्टेंस इक्वल है, तो हम कोई और पॉइंट चूज करते हैं यहाँ पे, दिस डज नॉट वर्क, लेट्स टेक अनदर पॉइंट, लेट्स टेक दिस पॉइंट हियर। अच्छा, इसका डिस्टेंस दोबारा से p और p डैश से इक्वल है, अब उसको देख लें, q और q डैश से, वेल इट्स स्टिल नॉट द सेम, ओके, r डैश से भी सेम नहीं है, आपको थोड़ा सा r डैश की तरफ जाना है और q की तरफ जाना है, q की तरफ भी जाना है और r डैश की तरफ भी जाना है, क्योंकि उनसे डिस्टेंसेस ज्यादा आ रहे हैं। सो हाउ डू यू डू दैट? लेट्स मूव इट मोर टुवर्ड्स द राइट, लेट्स से एक और पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, आप ये वाला पॉइंट चेक कर लें पहले, फिर आप देखिए वहां पे भी नहीं आ रहा, फिर आप थोड़ा सा नीचे आए, जैसे दिस पॉइंट r डैश का डिस्टेंस यहाँ से देखें, इट्स स्टिल नॉट द सेम, राइट, q डैश का that's also not the same, p dash का same आ रहा है अभी भी, so that doesn't work either. Let's take another point here, let's say we take this point. अब यहाँ पे जब पहुंचेंगे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ट्राई करके and you know doing trial and error, तो आप क्या करोगे, आप क्विकली देखोगे p और p dash से डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, राइट, so this distance is equal p और p dash से, r dash से भी इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हो using a ruler, राइट, r dash से भी इक्वल डिस्टेंस आ रहा है और q dash से भी equal distance आ रहा है. So once you have figured out such a point, you know that is the center of rotation. So sometimes it works quicker, sometimes it takes more time. So if you have you know you have this experience of doing it like this, then I would recommend it. Otherwise, a perpendicular bisectors draw kar le, then that's also perfectly okay. Now, how do you find the angle of rotation and the direction of rotation? Now, किसी भी corresponding point को join कर दें, किसी भी corresponding point को join कर दें, and that will give you an idea. So, for instance, center से, center हमारा क्या है? Center is this. This is the center of rotation. Center of rotation से आपने corresponding points को join कर देना किसी भी. So, let's say I join C and R here, and I join C and R dash. Center से आपने corresponding points, कोई भी set of corresponding points को join कर दिया. अब देखिए original object क्या था? Original object was this one, this A. That was the original object. एक को क्या हुआ? ये object था, ये rotate होके ऊपर चला गया. R is going to R dash here. So you can see here it's a 90 degrees rotation. So it's 90 degrees rotation and it's clockwise. So it's 90 degrees clockwise rotation. So that's how you describe a rotation. You say it's a 90 degrees angle. Angle आपने define कर दिया. You tell which direction it is, clockwise or anti-clockwise, and then you tell the center of rotation. So it's a rotation 90 degrees clockwise with center of rotation 4, 4. Okay, so that's the rotation. Okay, so that's how you find the center of a rotation. ठीक है, perpendicular bisectors के जो intersection point होता है, और फिर angle of rotation find करने के लिए आप क्या कर सकते हो? Join any set of corresponding points, r dash, p dash, q dash, किसी को भी आप join कर लें center के साथ, और आप उसको देख लें कि अच्छा वो किस तरह से angle क्या बन रहा है, और वो anti-clockwise या clockwise. All right, let's go to enlargement now. Enlargement क्या होती है? In which your size of the object becomes either bigger or smaller, right? लेकिन जो shape होती है इसके अंदर, it remains exactly the same as before. Shape change नहीं होती. So that's why you see object और image जो हैं वो आपके similar figures बनेंगे, और उनमें वो similar figures वाले जो है वो properties भी apply हो रही होंगी. Now how is enlargement described? It's described by a center of enlargement
सेंटर रोटेशन होता है उसी तरह सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होता है, जिसके अबाउट आपकी एनलार्जमेंट हो रही होती है, देन यू हैव अ स्केल फैक्टर कि कितना आपने ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है छोटा करना है। नाउ ऑल्दो इट्स कॉल्ड एन एनलार्जमेंट, अगर आपका छोटा भी हो रहा हो फिगर ऑब्जेक्ट तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एन एनलार्जमेंट, ठीक है, स्केल फैक्टर उसका 1 से छोटा हो जाता है। अच्छा, नाउ लेट्स take a couple of examples. So let's say you've got this triangle A again. You want to enlarge it with scale factor 2. अब scale factor 2 क्या मतलब है कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो साइड्स हैं वो 2 times बड़ी हो जाएंगी, पहले से 2 times बड़ी हो जाएंगी, and the center of enlargement here is the origin. Origin is the center of enlargement. So how does this work here? अब ग्राफिकली करने का क्या तरीका है, आप इसको देखेंगे, आप इसको अपना रूलर रखेंगे ओरिजिन पे आप देखें x का कितना डिस्टेंस बन रहा है, इसको बस 2 टाइम्स कर दें, ओरिजिन से जितना भी डिस्टेंस बन रहा है इसको 2 टाइम्स कर दें, दैट्स गोइंग टू बी योर x बार, ठीक है। सिमिलरली ओरिजिन से y, दिस इज 1 टाइम, इसको आप 2 टाइम्स कर दें, इसको और आगे ले जाएं, दैट्स योर y बार। सिमिलरली जो सेंटर ऑफ रोटेशन है उससे आप z का डिस्टेंस देखा, जितना भी डिस्टेंस है उसको आप 2 टाइम्स कर दें, you get right here, that's your z bar. So this is the quickest way of just doing it graphically. आप देख लें जितना डिस्टेंस आपके ओरिजिनल फिगर का बन रहा था उसको बस आपने क्या करना है, उसको आपने 2 टाइम्स कर देना है यूजिंग अ रूलर, एंड बी केयरफुल कि मोस्टली जो है आपके जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं दे आर एट द corners of the boxes on the grid. ये corners पे आ रहे होते हैं मोस्टली, sometimes very rarely मिडिल में 0.5 पे आ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको नहीं चाहिए होती, ठीक है। ज्यादातर कॉर्नर्स पे आ रहा होगा, कभी वेरी रेयरली दरमियान में 0.5 पे आ जाएगा। अच्छा, सो दैट्स योर एनलार्जमेंट। अच्छा, इसको करने का एक थ्योरेटिकल तरीका भी होता है, वो क्या तरीका होता है, आप सेंटर से देख लो पॉइंट्स किस तरह से आ रहे हैं, सेंटर से आप एक्स पे कैसे पहुंच सकते हो, सेंटर से आप एक्स पे कैसे पहुंच सकते हो, you have to go 1 unit right and then 1 unit up. Okay, so you write that here, 1 unit right and 1 unit up, just like this. स्केल फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई कर देना, उसको स्केल फैक्टर आपका बाहर होगा, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो 2 into 1 1, दैट मींस 2 2। अब आपको x बार कैसे मिलेगा, सेंटर से आपने 2 यूनिट्स राइट जाना है एंड देन 2 यूनिट्स अप, दैट्स योर x बार। सिमिलरली फॉर y पे कैसे पहुंचते हैं आप, सेंटर से y पे पहुंचने के लिए यू हैव टू गो 2 यूनिट्स राइट एंड देन 1 यूनिट अप, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यू गेट 4 2, दैट्स गोइंग टू गिव यू योर y बार, दैट्स दिस थिंग। y bar तो कैसे पहुंचेंगे आप, 4 right and then 2 up, that's your y bar there, okay। अच्छा, similarly for z here, z पे आप कैसे पहुंच सकते हो, originally 1 right and 3 up, that's 1 right and 3 up, उसको 2 से multiply किया, you get 2 6, so you got 2 units right and 6 units up, that's your z bar here, okay। So that's how you can do it theoretically, but it's much quicker if you do it just graphically like that। अच्छा, what if the center is not the origin, आपका वो फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, जो भी आपका सेंटर है उससे आप देख रहे होगे। अच्छा, you have to enlarge this with scale factor 3 and center -1 and 3, okay। Again, you can either do this using a ruler directly on the graph। So how would you do that, you would say c का z से डिस्टेंस जितना भी बन रहा है उसको आप 3 टाइम्स कर दो, 2 3, this is going to be your z dash। c का डिस्टेंस x से जितना भी बन रहा है उसको आप 3 टाइम्स कर दो, so 1 2 and 3, that's going to be your x bar। इस तरह y का जितना भी डिस्टेंस बन रहा है उसको 3 टाइम्स कर दो, यूज अ रूलर फॉर दिस, जितना भी डिस्टेंस की लेंथ आ रही थी तो 3 टाइम्स कर दो, बॉक्सेस काउंट करके भी कर सकते हैं, वैसे वो भी देखते हैं, 2 times and then you have this 3 times, your y is going to be somewhere here, this is going to be your y dash here, yes, ये आपकी फिगर बन जाएगी, that is your enlarged figure, x bar, y bar and z bar। Okay, so that's your enlarged figure, it looks something like this, okay। अच्छा, इसी को आपने उसी तरह से आपने करना होता है using those vectors, आप क्या करोगे, स्केल फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे इन वेक्टर्स के साथ, लेकिन वेक्टर्स कहां से आ रहे हैं, आपने सेंटर से देखना है आप x y z पे कैसे पहुंच सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, सेंटर से x पे कैसे पहुंच सकते हैं, we go 2 right and then 2 down, so that's 2 right and 2 down, 2 and -2, इसको आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, you get 6 and -6, अब x बार कैसे आएगा, 6 units right and then 6 units down, that's your x bar there, ठीक है। Similarly y क्या है, 3 units right and 2 units up,
3 right and 2 units down, sorry, 3 right and 2 down, that's your y. इसको हमने 3 से multiply किया, what do you get? You get 9 and minus 6. 9 minus 6 का मतलब है कि y bar वहां पे होएगा, you go 9 units right and then you go 6 units down, that's your y bar there. Okay, and then finally you've got z there. Z कैसे होएगा? Z is 2 units to the right, उसको 3 से multiply किया, it becomes 6 units to the right, that's z bar there. So that's your enlargement. अच्छा, इसमें scale factor आपका अगर minus हो जाए तो क्या होता है? अगर आपका scale factor negative हो जाए, your figure is going to go on the other side of the center of enlargement. Okay, on the other side of the center of enlargement. So अगर आपका scale factor, for example, -2 है and the center is 0, 3 here, this is the center. So even though the figure is going to become 2 times as before, उसकी length जो होगी वो 2 times होगी as compared to before, लेकिन वो दूसरी side पे होगा center के. Right? For example, z यहाँ पे 1 unit था, it's going to be 2 units on the other side. That's going to be your z bar. Center के x जो था, it was like this here. इतना ही distance, इससे 2 times distance आप दूसरी side पे इसको ले जाओगे, and it's going to look something like this. This is 1 time and this is 2 times. That's going to be your point x bar. Okay, so you use a ruler for this, and this is what you get. This is x bar. Similarly, y, this is like this on one side. It's a double up दूसरी side पे चले जाओ. That's 1 time and that's 2 times. That's your point y bar. You join them, and that is your enlarged figure with scale factor -2. Correct. So it's going to look something like this. All right, that's your enlarged figure. इसी को भी आप उस तरह भी कर सकते थे using those vectors. आप देखें center से आप z पे कैसे पहुंच सकते हैं? 1 unit right and no units down. तो उसको आपने -2 से multiply कर दिया. You get -2 and 0. Center से up you have 2 units left. That is your z dash. ठीक है? Similarly, x पे कैसे पहुंच सकते हैं? 1 right and 2 down. That's 1 right and 2 down here. So how do you get x bar? You multiply this with -2. -2 से multiply किया, you get -2 and 4. So center से आप क्या करोगे? 2 units left and 4 units up. That's your x bar here. Similarly for y here, y is 2 right and 2 down. 2 right and 2 down. उसको -2 से multiply कर दिया. What do you get? You get -4 and 4. So that's 4 units left from the center and then 4 units up. That is your y bar. Okay. So that's what happens here. Now let's move on. Next we have, so we have to enlarge A with scale factor 1/2 now. So scale factor is now less than 1. जब scale factor 1 से छोटा हो जाएगा, आपकी figure actually छोटी हो जाएगी. ठीक है? 1 से छोटा number होएगा, your figure will actually shrink rather than becoming bigger. It will become smaller. So center आपके let's say -3, 5 है. This is the center. Again, you can use your vectors like that as before. That's right there. You can have a look at that. Ruler से आप क्या करोगे? You'll just see this distance. C से Z कितना आ रहा है? C से Z is this. इसका half क्या होएगा? इसका half यहाँ पे कहीं आ रहा होएगा. That's going to be Z bar. ठीक है? इसी तरह से C से आप X देख लें. You can use a ruler for this. X यहाँ पर आ रहा है. इसका half कहाँ पर होएगा? It's going to be somewhere here. ठीक है? And then you check Y similarly. ये आपका उसको join करते हैं. C और Y को. You don't really have to join it. आपने बस ruler से देखना है. Ruler आपने इस तरह place करना है. उसका midpoint देख लेना है. So that basically turns out to be somewhere here. That's your point, y bar, in the middle of these two numbers. That's y bar here. So your figure is going to look something like this. So आप देखें, आपके figures की जो corresponding lengths हैं, वो half हो गई हैं. So x y जो था यहाँ पे, x bar y bar जो है दूसरे figure के अंदर, that is now half of that. पहले 1 unit था, अब 0.5 unit है. इस तरह xz, that was 2 units earlier. xz was 2 units earlier. Now it is 1 unit. So half होगी आपकी सारी lengths. ठीक है? So that's how you make it. Similarly, आप vectors भी देख सकते हो right side पे, किस तरह से आप देख सकते हो center से, किस तरह से हमने वो बनाए हैं. Okay. Now, what if you had to do the other way around? आपके पास एक transformation दी हुई है, आपने center find करना है enlargement का. इसको figure out करना तो बहुत आसान होता है. कि आपको अगर size change हो रहा है, that means it's an enlargement. So that's pretty obvious.
So how do you find the center of enlargement? You just join the corresponding points of the object and the image, and that the point of intersection will give you the center of enlargement. Corresponding points को join करेंगे, जहाँ पे intersect करेंगे, that is the center of enlargement. And how do you find the scale factor then? या आप कोई भी corresponding ratio देख लेंगे अपने image के ऊपर और object के ऊपर, और length of image divided by the length of the object, corresponding lengths की ratio, that is going to give you the scale factor. और यहाँ पे अगर वो center के opposite sides पे तो negative होएगा, अगर center के same side पे तो positive होएगा. ठीक है? So positive K is when the object and image are on the same side of the center. Negative K is when they are on the opposite side of the center. जब negative K होता है ना, आपकी figure आपकी invert भी हो जाती है. आपकी figure आपकी invert भी हो जाती है, उस उल्टी हो जाती है figure negative K के केस में. ठीक है? और figure आपकी बड़ी कब होती है? जब आपकी K की वैल्यू या तो 1 से बड़ी हो, या तो 1 से बड़ी हो K की वैल्यू, या फिर -1 से छोटी हो. उसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो तो आपका ऑब्जेक्ट बड़ा होएगा. अगर आपका मैग्नीट्यूड -1 और 1 के दरमियान में है, अगर आपका K की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केल फैक्टर इज लेस देन 1, देन द ऑब्जेक्ट बिकम्स स्मॉलर. ओके, इसमें सिमिलर फिगर्स वाले फॉर्मूलाज भी आपके अप्लाई होंगे. उस तरह से यूजिंग सिमिलर फिगर्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट की जो रेशियो होती है, दैट इज गोइंग टू बी स्क्वायर ऑफ K स्क्वायर, बिकॉज़ दैट इज K इज द रेशियो ऑफ द लेंथ, उसका स्क्वायर यहाँ पर आएगा. ठीक है? अच्छा, so let's say you have this figure A and B. You have to describe the transformation that maps A onto B. How do you do this? आपको नजर आ रहा है कि the size is changing, so this is going to be enlargement. That much we understand. This is an enlargement. However, we have to describe this enlargement now. So you have to tell two things: what is the center and what is the scale factor. So I would recommend you find the center first. That will make it easier for you to think about the scale factor's sign. So how do you find the center of enlargement? You mark corresponding points. So this is X, Y, Z like this. दूसरी figure के अंदर जो 90 degrees होगा वो X होएगा. Smaller side is then Y, and then this bigger side is XZ. Bigger side is Z bar. Let's join corresponding points. Corresponding points को join कर लेते हैं. ZZ dash. ZZ dash. Then you have YY dash. That's your center of enlargement. But just to confirm, let's do the third one as well. XX bar को भी join कर लेते हैं. This is what we get. That's your center of enlargement. That is the center of enlargement, which is this point here. That's 3 and 3. Okay, so center is 3 and 3. अब scale factor क्या होगा? Take any corresponding length. X, Y original था. X bar, Y bar क्या हो गया? 2 हो गया. So this was 1, this was 2. K क्या हो जाएगा? K is going to be और image की length divided by the object की length, that's 2/1. ठीक है, अगर आप ये corresponding length use करें. But since the object and the image are on the opposite sides of the center, यहाँ पे ये negative पे आ जाता है. So scale factor is going to be -2 here. आपकी figure भी देखें invert हो रही है, उल्टी हो रही है figure A और B. So that's why the scale factor is negative there. So that's -2 scale factor. All right. Now, how do you? So just to summarize all of that, how do you identify a given transformation? You basically look at the first thing that you notice is whether the size is the same. अगर size same नहीं है, size change हो रहा है, that's pretty obvious. That's an enlargement. आप उसको describe कर दोगे using describe कर दोगे by the center of enlargement and the scale factor. Okay, दो चीजें वहां पे लिख दोगे. That will be your description. अगर size same रह रहा है, फिर आप चेक करोगे क्या orientation same है, direction same है, क्या आपको लग रहा है कि figure उठा के बस आपने दूसरी जगह place कर दिया? Is it just a shift? If that is the case, then that is translation. उसका आपने translation vector से बताना होता है vector क्या है. If that is not the case, अगर उसकी orientation या direction change हो रही है, तो फिर क्या है? It's either going to be reflection or rotation. किस तरह से identify करोगे? Corresponding points को आप join कर दोगे straight lines के साथ. If they turn out to be parallel, that's a reflection. अगर वो parallel आ जाते हैं reflection है, आपने line of reflection बतानी है using the midpoints. अगर वो parallel नहीं आती straight lines, then it's a rotation, and you have to tell the angle, whether it's clockwise, anti-clockwise, and you also have to tell the center of rotation. Okay, so that's how you think about which transformation this is.
Okay, now let's come to matrix transformations. Matrix transformations में क्या होता है? Matrix transformations के अंदर you have to basically remember some common transformations के matrices, right? So for example, you have to know कि reflection जो है x axis में, y axis में, y equals x, y equals minus x, इन सब के अंदर reflection जो होती है उनके किन matrices से represent होती है. Now it's hard to remember all of them, you know, it's hard to memorize all of them basically. So this is the method to help you remember them. Okay, and this is actually the way they are created. We start with this identity matrix. Identity matrix आप start करते हो 1 0 0 1. So you write these points like this, A and B. आपने एक पॉइंट, हमने दो पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर कर लिए जो आप नजर आ रहे हैं इस फिगर के अंदर. 1 point is 1 0 जिसको आप पहले लिखोगे यहाँ पे 1 0 पहले लिखेंगे, 0 1, that's this point here, and this is called an identity matrix 1 0 0 1. इसको यूज करके आप सारे मैट्रिसेस फाइंड कर सकते हो. ठीक है, अब ये चार पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स आप देख लें एक दफा. 1 0 ये वाला पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज 0 1, ओके, and then this point is 0 minus 1, this point is minus 1 0. ठीक है, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे होंगे नीचे, so you have to know कि ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स बनते हैं. आपने क्या करना है, A और B को आपने देखना है हर ट्रांसफॉर्मेशन से वो कहाँ पे चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन इन द x axis, x axis में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये 1 0 0 minus 1, where is this going to go? 1 0 0 minus 1, sorry, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, you have to start from 1 0 0 1. इन पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है. ठीक है, इस 1 0 0 1 से स्टार्ट करना है. सो A is 1 0, remember this is A and this is B. मैं आपके हर फिगर के ऊपर मैंने आपके मार्क किया हुआ है A और B क्या है. So this is your A, that's 1 0, and this is your B, that's 0 1. अच्छा, अगर x axis में रिफ्लेक्शन होगी तो A कहाँ चला जाएगा? A will just stay there, and so A dash is exactly the same. So that's why we have 1 0 here. 1 0 आपके पास वहां पे आ गया. ठीक है, B कहाँ चला जाएगा? B will go down here, x axis में reflect होके, that's B dash. इसके coordinates क्या होते हैं? 0 minus 1, so that's your B there, that is 0 minus 1. Okay, so something happened here. Okay, so x axis में reflect होके क्या होगा? B आपका नीचे चला जाएगा, and that's your B dash, so that is your other point, that's 0 minus 1. So that's the matrix that represents the reflection in x-axis. Similarly, you can look at what happens in y-axis. Let's look at y equals x, for instance. Now, again, the 1 0 कहाँ चला जाएगा? A point कहाँ चला जाएगा? Reflect okay, that's going to go to A dash here. So that's 0 1. That's the first point here. B कहाँ चला जाएगा? B will go to this point here. That's 1 0. That's B dash. So that's 1 0 here. Okay. Y equals x में reflect होके आपके points इस तरह से change हो जाएंगे. So that's where this matrix is coming from. What happens here? Y equals minus x. A point जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, reflect होके y equals minus x के अंदर. इस तरह B point जो है वो यहाँ पर आ जाएगा. A dash के coordinates क्या बन रहे हैं यहाँ पे? 0 minus 1. So that's why you have 0 minus 1 here. B dash के क्या बन रहे हैं? Minus 1 0. That's why you have minus 1 0 here. So remember, these are basically A dash here and B dash here. Mark those points here as well. So this is your A dash, this is B dash. Again, this is A dash, this is B dash, this is A dash, this is B dash, A dash, and B dash. इस तरह से आपके reflect होके यहाँ पर आ रहे हैं. What happens when you have rotation? So let's say 90 degrees anti-clockwise rotation. उसमें क्या होएगा? आप उन्हीं point से start कर रहे हो, A और B point से. A point कहाँ चला जाएगा rotate होके? A dash पे आ जाएगा. राइट, रोटेशन के बाद B का चला जाएगा रोटेट होके यहाँ पे नीचे आ जाएगा. A dash के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 1. B dash के क्या है? minus 1 0. So that's your matrix for 90 degrees anti-clockwise rotation. ठीक है. So similarly, you can look at the other one. What's happening here? A किस तरह से आपके points move कर रहे हैं, उसी तरह से आपके पास ये matrices आ जाएंगे वहाँ पे. Enlargement का matrix आप वैसे याद रख सकते हो. That's the easier one to remember. So that's K0 and 0K. K is the scale factor here. Now remember, यहाँ पे हमने जो rotation discuss की है और enlargement discuss की है, इन दोनों में center origin होता है, right? Center is origin. Matrices आपके पास जब भी आएंगे, center उसमें origin हुआ करेगा, right? Other matrices are not in your syllabus. या अगर उसको कुछ और वो कहते हैं, आपको वो matrix बताएगा, आपसे खुद पूछेगा नहीं, ठीक है? So center origin होएगा rotation के अंदर भी, enlargement के अंदर भी, whenever you're dealing with matrices.
एनलार्जमेंट के केस में क्या होगा, k0 के, सो ये स्केल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका स्केल फैक्टर फॉर एग्जांपल 3 है, स्केल फैक्टर इज 3, तो आपका देखें 10 पॉइंट कहाँ चला जाता, ये 30 पे चला जाता, और 01 कहाँ चला जाता, ये 03 पे चला जाता। सो ये मैट्रिक्स वुड हैव बीन 3003। तो जो भी आपका स्केल फैक्टर होगा उसको आप k से रिप्लेस कर दोगे, उस k को उससे रिप्लेस कर दोगे, and that will be your matrix for enlargement. Now how do you use these matrices? For example, if you had to rotate something 90 degrees clockwise about the origin, if you have this triangle here, triangle A, if you had to rotate this 90 degrees clockwise about the origin, what happens? You can either do it using the methods that we discussed earlier, लेकिन आप इसको matrix से भी कर सकते हैं। 90 degrees clockwise rotation about origin का matrix क्या होता है? Let's go there and figure this out. This was the matrix that we had written here, 0 1 and -1 0. आप क्या करोगे? इस matrix को यहाँ पे लिखोगे, sorry, 0 -1 and 1 0. So that's 0 -1 and 1 0. That's your matrix here. इसको आप multiply कर दोगे उन coordinates के साथ, right? So coordinates क्या है? X के coordinate. This is your point X. X coordinates are 1 1. ठीक है, y के coordinates they are 2 1, z के coordinates are 1 3. You just multiply these two matrices. Remember जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैट्रिक्स होगा वो पहले लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स बाद में लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स होएगा, that will be your coordinates for the image. ये x bar आ गया आपके पास पहले 1 1 1 -1, y bar is 1 -2 and z bar is 3 -1. इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, this is what you end up with. ओके, ये आप इनको मार्क कर देंगे फिगर के अंदर, उनको ज्वाइन कर देंगे उन पॉइंट्स को, एंड दैट विल बी योर ट्रांसफॉर्म फिगर। ठीक है, तो मैट्रिक्स इस तरह से यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स बाद में लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देन यू हैव दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैट्रिक्स -1 0 0 -1। अब ये इस तरह से, ये आपको जो है वो नोटेशन भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो इससे रिप्रेजेंट हुई है, और उसने मैट्रिक्स बताया, तो आपको नहीं पता कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, यू डोंट नो अबाउट दैट। सो आइदर यू कैन फिगर आउट कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको अगर मैट्रिक्स उस तरह से बनाने आते हैं तो आप क्या करोगे, ये आप देख लोगे ये मैट्रिक्स किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, और आप वो डायरेक्टली वहां पे कर लोगे। बट अ क्विकर वे कुड हैव बीन, आप बस इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, नो मैटर व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज, आप इसके कोऑर्डिनेट इस तरह से लिख दोगे, दिस इज द मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेट्स आपने लिख दिए x y z के, इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो रिजल्ट आएगा उनको आपने बस प्लॉट कर देना है वहां पे। ठीक है, x बार y बार z बार को आप प्लॉट कर दोगे वहां पे, एंड योर रिजल्ट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली द मैट्रिक्स फॉर 180 डिग्रीज रोटेशन। तो अगर आप फिगर आउट कर लेते हैं, आप वो डायरेक्टली वहां पे वो भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, m इज बीइंग अप्लाइड ऑन a, m a के ऊपर अप्लाई हो रहा है, आपके पास रिजल्ट आ रहा है b, so that's your triangle b there. Okay, अच्छा, then you have combined transformations as well, कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। So let's take an example. Let's say you have a transformation that is reflection in x-axis. You got another transformation that is reflection in y equals x, और इनको rx और rd से represent किया हुआ है respectively. Now let's say वो कहता है कि rd rx आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है a के ऊपर, और ये जो रिजल्ट आएगा that is you going to be your b. अब क्या होएगा, इसमें ऑर्डर का आपने ख्याल रखना है, जो ए के साथ लगा हुआ है, जो उसके बिल्कुल पास है, दैट इज गोइंग टू अप्लाई फर्स्ट। जो उस पॉइंट के बिल्कुल साथ है या उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल साथ ट्रांसफॉर्मेशन लगी हुई है, वो पहले अप्लाई होगी उसके ऊपर, यानी कि रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में पहले करनी पड़ेगी। जो रिजल्ट आएगा उसका, उसको फिर आप उसके ऊपर आप बाहर वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, दैट इज रिफ्लेक्शन इन y equals x. So the first step would be reflection in the x axis. ये पहले अप्लाई होगा, Rx is going to be applied first, and then second will be Rd. जो आप पहले आ रहा होता है वो बाद में अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिगर थी, ट्रायंगल, ट्रायंगल को हमने रिफ्लेक्ट कर दिया एक्स एक्सिस के अंदर, ये नीचे वाली फिगर आ गई, इसको फिर हमने रिफ्लेक्ट कर दिया y इक्वल x के अंदर, ये हमारे पास फाइनल फिगर आ जाएगी, दैट इज दिस ट्रायंगल B. ओके, तो पहले x एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया, बाद में y इक्वल x में रिफ्लेक्ट किया। And then lastly, you might have seen a couple of questions on inverse transformations as well. So inverse transformation का concept is very straightforward. आपके पास कोई भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन है जो किसी ऑब्जेक्ट को एक इमेज में मैप करती है, तो
An inverse of that transformation would be that maps that image back to the original object, right? So for example, आपके पास ये common जो है वो transformations हैं और उनके inverses. So if you have a translation that's A and B, तो आप क्या करोगे, उसका inverse क्या होएगा, बस आपने उनके components के sign change कर देना ताकि वो वापस अपनी original position पे आ जाए. Inverse क्या होएगा, minus A minus B. उसके बाद sign change करके. For example, if the transformation was 3 minus 5, translation was 3 minus 5, तो इसका inverse क्या होएगा, minus 3 5. ये translation करने से वो वापस अपनी original position पे आ जाएगा. That's why it's called an inverse. Reflection का inverse वही reflection होती है. For example, x axis में reflect करेंगे तो उसका inverse क्या होएगा, वापस original object पे कैसे जाएंगे, x axis में दोबारा reflect करते हैं. So that's the same transformation again. Reflection में वही आप दोबारा reflection कर दो. Similarly, 180 degrees rotation करते हैं. 180 degrees rotation का inverse is also 180 degrees rotation. ठीक है, so वो भी वही रहता है. That is not change. अच्छा, rotation के अंदर आपको देखना है 90 degrees या 180 degrees के अलावा कोई भी और rotation जब clockwise हो रही होगी उसका inverse क्या हो जाएगा, वही rotation with the same center of rotation anti-clockwise. अगर anti-clockwise rotation थी with some center of rotation, उसी rotation को आपने clockwise कर दिया, that will be the inverse. ठीक है, with the same center of rotation. So आपने anti-clockwise को change कर दिया clockwise, clockwise को anti-clockwise. Now enlargement is a bit tricky. So enlargement अगर आप कर रहे हो किसी scale factor k के साथ, तो उसका inverse क्या होएगा, scale factor को आपने 1 over k कर देना, उसका reciprocal कर देना. For example, if the scale factor was 2, तो उसका जो inverse होएगा उसमें जो scale factor होगा with the same center of enlargement, that will be 1 over 2. क्योंकि पहले आपकी length 2 से multiply हो रही थी, उसको inverse करने के लिए आप क्या करोगे, उसको 2 से divide कर दोगे या 1 over 2 से multiply कर दोगे. So your inverse will be like this. अगर आपके scale factor initially let's say -3 था, उसका inverse क्या होएगा, उसका inverse होएगा -1 over 3. उसका reciprocal कर देंगे, that will be your inverse. Okay, so that's all about enlargement. I hope this was helpful. For a detailed video on all of these transformations, there are also some past paper questions. You can see these links here. Thank you very much, everyone. I'll see you again in another video. Allah Hafiz.